Hello, dear teachers. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, let us today talk about some of the end of the lesson metacognitive wrappers. You also call them lesson wrappers. Reflection activities. कुछ भी कहिए, reflection activity कहिए, lesson wrapper कहिए, formative assessment कहिए, like we want to know about our children learning, like कितना उनको समझ में आया है, so that we will be able to plan our next lesson, right? तो कि we should be able to present the best to our children. मैं हमेशा जब formative टेस्ट की जब एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करती हूँ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट शबरी जी, जो कि शबरी ने क्या किया, अपने बेर खाए, उनको टेस्ट किया, कहीं खट्टे कहीं कड़वे जो बेर हैं, वो श्री राम को वो भेंट में या उनको आगे प्रेजेंट ना करें, कि उनको खाने के लिए ऑफर नहीं करें, ठीक है? एक एक बेर चखा उन्होंने, ताकि कुछ गलती ना हो जाए, राइट? तो वो क्या है, ऐसा भाव कि बहुत अच्छा करना है, द बेस्ट, राइट? घर में जब कुकिंग करते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब अपने लिए भी करते हैं, मतलब स्पेशली हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जब घर में मेहमान आने होते हैं, ठीक है? तो खाने को बनते-बनते भी एक बार ये चेक करते हैं, टेस्ट करते, चख लेते हैं, नमक, मिर्च, वो तीखा और सब ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो बीच-बीच में उसको चेक करते रहते हैं कि हम उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँ। दैट शुड बी आवर बेस्ट प्रेज़ेंटेशन। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो टाइम निकल जाए और वो ध्यान नहीं रहा, सब्ज़ी ज़्यादा गल गई या वो कच्ची रह गई या उसमें नमक कम रह गया, ज़्यादा डल गया, तो फिर वो जब प्रेजेंट कर देते उसके बाद में हमारे पास गुंजाइश नहीं होती उसमें चेंज करने की। यही होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का, कि हम टाइम टू टाइम वो चेक करते रहें कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, सो दैट वी विल बी एबल टू स्कैफोल्ड देम। हम उनको उस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, उनको मोटिवेट कर सके, right, उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर सके, so that they'll be able to do the best in the final examination. My lovely educators, let us today talk about some of the lesson wrappers. So one is there in front of you. Copy and complete the following sentences. One thing I did that helped me to learn this lesson was, right? कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुझे इस लेसन को, इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प की है? Like, is it any activity? Is it like you have taught through videos, role plays, or maybe any activity that the child was impressed, right? And one thing I did that hindered my learning in this lesson was, एक obstacle थी today's lesson, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई आज के इस lesson को, या एक आज के इस lesson में से particular topic, एक particular content मुझे समझ में नहीं आया है, और उसका जो reason है वो क्या था? तो accordingly the children, they will be able to share that. I can improve the rate at which I learn in the next lesson by. आज का lesson ठीक है, complete हो गया, next lesson में I want कि I should be able to give my best. मेरी जो learning है उसकी performance, उसका जो rate है, that should be enhanced, और उसके लिए मुझे क्या करना है, right? The children, they'll be able to tell you whatever they are thinking, whatever it is their observation and their planning for the upcoming lesson. Create two lists adding as many ideas as you can to each. Like recent topics I have a secure understanding of, and the recent topics I need to revisit and research, right? They are talking about the different topics that they have recently covered, right? Recently covered, I mean, if you are taking this assessment wrapper, maybe end of the unit, maybe at the end of the week also, like whatever you have learned throughout the week. So this weekend you have to complete this wrapper and you have to talk about different topics that you have learned throughout the week. So this you can discuss with your children. Now this is up to you. You want to share it with your children in a printed format. You want to share it in the form of Google format. You want to discuss with your children. Let me tell you, you won't be able to discuss with all the children altogether. Yeah, some of the children you can target. Yes, I need to talk to them separately and you can spend time with them. It will not be possible for you to talk to all 35 to 40 children. So you should share these printed sheets with them. They'll be able to fill the same. Either the same can be given in the classroom after the end of the chapter. You can spare 10 minutes at least at the end of the week, so the children, they'll be able to
fill in the same, or you can give these wrappers to, like, send it to home so that they'll be able to fill in, like, think about it, all the topics that they have studied throughout the week. And the next one is complete the tasks above. वो तो हमने कर ली complete, बच्चों से करवा ली. At the end of the lesson, it's essential that you always evaluate your work and reflect on how to improve. So you are motivating your children. Yes, at the end of every chapter, every topic, you need to think about it. So my lovely educators, make sure at the end of every chapter you share such kind of reflection sheets. As in my past, in the recent videos, I have shared with you number of exit ticket activities. So this is a kind of exit ticket activity, right? But because the children, they need to think, so it is assessment wrapper, you need to spend more time, you can send it home also. Now how we can extend the same? As you can see, think, pair, share, reflection activity can also be done. I mean, children, they have filled in their own assessment sheet, like the exam wrappers. ये अपने अपने उन्होंने fill कर ली है assessment sheet. उसके बाद में they can share the same. Think, pair, share. They can think about it. They'll be filling in their sheet. They will pair up with the partner, and then they will be sharing with the class also. Okay, at large की उनकी क्या thinking है, उनको क्या समझ में आया है. So इसके accordingly, you can foster peer tutoring also in your classes, my lovely educators, right? So let's move on to the next slide. Now here there are different questions. Copy and complete the following sentences. One thing I should have done differently in that lesson is, क्या मैंने differently कर सकता था, मैं कर सकती थी, like they are reflecting on it, right? lesson आप लोग question आपके मन में आ रहे होंगे कि lesson से यहाँ पर क्या बात है. Lesson is chapter, lesson is unit, lesson can be any topic, right? कुछ भी आप जो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड बच्चों से पूछ रहे हैं. सपोज मैंने एक टॉपिक एडजेक्टिव्स पढ़ाया, तो मैं उससे रिलेटेड बच्चों को ये शीट दे रही हूँ, राइट? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज लिटरेचर में मैंने उनको कुछ और चीज करवाया है, ग्रामर में मैंने उन्हें एनालिटिकल राइटिंग करवाया, तो मैं उससे रिलेटेड उनसे पूछ रही हूँ. द चाइल्ड मस्ट हैव डन कि मैं इसको डिफरेंट तरीके से कर सकता था, मैं कर सकती थी, राइट? आई वुड हैव लर्नड मोर इन दिस लेसन इफ आई during the course of the lesson, like when everything was going on in the class, मैं इसमें अच्छा कर सकता था, अच्छा कर सकती थी. When the lesson transaction was going on, right? So क्या करना चाहिए था मुझे उस टाइम पर, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ. One way I can boost my learning in this subject is to, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे अपनी लर्निंग को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू एक्सप्लोर मोर बुक्स, आई नीड टू रीड, आई नीड टू टॉक टू माई peers, I need to talk to my teachers, I need to interview, I need to gather data, I need to go and research online, I need to visit the library. That is their thinking, what all they wanna talk about, what all they are thinking, right? So this is really very important. Now create two lists, adding as many ideas as you can to each. How I can be more of an independent learner in this subject. Like I want our children, like we want our children to take the onus of their learning. हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, राइट? उनको क्या पढ़ना है, उनको क्या करना है. तो इस सब्जेक्ट के लिए आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट लर्नर, आई वांट टू टेक ओनर्स ऑफ माय लर्निंग. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एंड थिंग्स दैट हेल्प मी टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट, क्या क्या मुझे हेल्प करता है. लाइक इसमें बच्चे यू कैन टॉक अबाउट देयर ओन लर्निंग स्टाइल्स ऑल्सो, कि मुझे पढ़ के ज्यादा समझ में आता है. इवन व्हेन आई लिसन टू द पॉडकास्ट में कुछ काम करते करते भी आई कैन फोकस, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा है. मुझे वीडियो से ज्यादा समझ में आता है, मुझे एक्टिविटीज में ज्यादा इनग्रॉस करना पड़ेगा खुद को. लर्निंग बाय डूइंग से मैं समझ पाता हूँ. आई एम अ किनेस्थेटिक लर्नर, maybe I will be able to relate the same with the nature, real life. I'm a naturalistic learner. So the children, they'll be able to correlate with the different learning styles, right, with the environment. So okay, so they'll be able to give that kind of feedback. So the same can be done. Again, you can extend it through think, pair, and share, right? They'll be able to talk about the given topic, discuss the same with the peer group.
Okay, so now the next one is the thing I found most difficult to understand in this lesson was, सबसे difficult part क्या था इस lesson का? अब आपको पता चलेगा कि बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई, उसको difficult लगी है, तो next time you will try your level best to simplify that particular topic, right? So आप उसको अगले दिन क्लास में दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उसको. You can teach the same in a different format, different way, through different examples, right? The main obstacle to understanding was, समझने में डिफिकल्टी क्या आई? मे बी आपका क्लासरूम ऐसा है कि साइड में मे बी किंडरगार्टन की क्लासेस है, वो कुछ और एक्टिविटीज करते हैं, म्यूजिक रूम है, कि उनको नॉइज से डिस्ट्रैक्शन हुआ, राइट? और मे बी दैट द चाइल्ड वाज नॉट फीलिंग वेल, तो उनको कुछ ये ऑब्स्टेकल आई, राइट? और मे बी उनको ऑब्स्टेकल आ रही है पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को समझने में, मे बी आपने शायद एकेडमिक वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया क्लास में पहले. I mean, if you're talking about, suppose I always take very very simple examples. वाटर साइकिल आप पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन को समझाना, एक्सप्लेन करना, वो टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना शायद जरूरी नहीं समझा. यू आपको लगा कि शायद the children they are already familiar with these terms, तो हो सकता है ये उनकी लर्निंग में ऑब्स्टेकल बना, right? So you need to talk to your children related to this. I mean, get the details in this format. Things I do that help me to learn. मैं क्या क्या करता हूँ, मैं क्या क्या करती हूँ, that help me to learn. Like अगर मैं अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल की बात करती हूँ, कि लर्निंग स्टाइल स्पेशली कि मैं कैसे लर्न करती हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर. मुझे पढ़ के ज्यादा समझ में आता है. आई वॉन्ट टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, और मे बी समटाइम्स ट्वाइस एंड थ्राइस ऑल्सो. तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि कोई कहे कि मुझे एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है, आई जस्ट स्कैन, आई जस्ट स्किम और समझ में आ जाता है. ठीक है, एवरीबडी इज हैविंग हिज और ओन लर्निंग स्टाइल. मुझे शायद दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली ऑथर वांट्स टू से. ओके, सो everybody has his or her own learning style, so you must appreciate you have got unique learners in your class. Things I do that हिंडर माई लर्निंग. मुझसे ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे मेरी जो लर्निंग है वो हिंड्रेंस उसमें आती है, ऑब्स्टेकल्स आती है, क्या हो जाता है? आई मीन इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसा क्या कर देती हूँ मैं? मे बी मैं एक बार पढ़ के छोड़ देती हूँ, शायद दोबारा नहीं पढ़ती, राइट? मे बी शायद जो है, मैं साथ में म्यूजिक भी ऑन होता है, मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, राइट? तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू आस्क योर children. Okay, so my lovely educators, obviously only by analyzing, evaluating and regulating our approach to learning, we can help to improve, and then follow it by think, pair and share activity. Let them discuss with each other, let them know more about each other, what is their learning style. Now, another one is evaluate your performance, copy the following list and give yourself a score out of 10 for each factor. I have already shared one template with you in my previous videos on exit sheets, where it is mentioned focus, effort, progress, attitude, behavior, preparedness, quality of work, teamwork skills, understanding of content, and understanding of how to improve. So the children, they have to give marks to them, right? Rate themselves on a scale from 0 to 10. Okay, so let me say 1 to 10. Why 0? I mean, we always put some efforts, no? Cannot be 0. So on a scale of 1 to 10, the children, they need to rate themselves for these parameters. You can also change these parameters as per requirement, as per subject, as per topic, but they are not related to subject and topic. They are in general, like related to their behavior, like what kind of behavior they exhibit while learning. Okay, their attitude, their performance, their focus, their concentration, all related to their attitude. Now create a list of obstacles encountered in today's lesson. You have to make a list of the all the obstacles, right, that you have encountered. पढ़ते पढ़ते क्या क्या दिक्कतें आई, क्या ऑब्स्टेकल्स आई, क्या किस किसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, क्या क्या हुआ. यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर पाए, एंड नेक्स्ट टाइम we'll be able to help our children to do better. For each obstacle, note down how you might overcome it or reduce its impact on learning in future lesson, right? तो जो आपने जितनी obstacles के नेम लिखे हैं, लिस्ट किया है, जॉट डाउन किया है, तो हर एक ऑब्स्टेकल के लिए यू नीड टू जॉट डाउन कि आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, राइट?
तो यू वर फीलिंग स्लीपी, तो आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, राइट? या मे बी डाइट यू नीड टू वर्क ऑन इट, कि आपने शायद ज्यादा ऑयली लेते हैं, ज्यादा शुगर और ज्यादा सॉल्ट का इंटेक कई बार हो जाता है, तो मे बी यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल फॉर दैट, मे बी वी आर नॉट कीपिंग आवर सेल्फ प्रॉपरली हाइड्रेटेड, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि क्या चीज थी जिसने उसने आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दिया। सो complete the task above, my dear educator. You can share it with your children and then follow the same by think, pair, share activity. As you can see here on the screen, different activities they have been mentioned under the category think, pair, share. Do use this activity in your classes. And another one is, you see, when they'll be rating themselves, now there is another task: create a list of strategies you use in this lesson that help you to learn. आपने ऐसा क्या क्या आपकी एक्टिविटीज थी जिन्होंने आपको हेल्प किया टू अंडरस्टैंड, टू लर्न बेटर, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू डिड इन दिस लेसन दैट हिंडर्ड योर प्रोग्रेस एंड रिड्यूस्ड योर एबिलिटी टू लर्न। तो आपको दोनों चीजों के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके एफर्ट और आपकी ऑब्स्टेकल्स जो रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई मीन आपने ऐसी स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज करी जिससे यू वर एबल टू अचीव योर गोल, एंड जो जो हिंड्रेंस आई वो आपके किस बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से आई, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सो यू हैव टू do that. So my lovely educator, that's all for today. In the next video I'll be sharing with you more lesson wrappers to be used as exit tickets. For that, what you have to do, stay tuned and subscribe to my channel, hit the like button, don't forget to give your suggestions in the comment section below. Bye bye from Meenakshi Narula at Mentoring the Mentors.